Okay, so let's talk about the merger of Sikkim with India. सिक्किम पहले खुद से एग्जिस्ट करता था. इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन. वो एक सेपरेट स्टेट था विच हैड इट्स ओन मोनार्क. इट वॉज नॉट अ डेमोक्रेसी, इट वॉज रूल्ड बाय अ मोनार्की, right? So Sikkim anyway could not exist on its own. It needed India's help. So Sikkim was basically a protectorate of India. The word protectorate implies कि India provided protection to Sikkim. So what happened basically was सिक्किम का जो डिफेंस मैटर था और जो फॉरेन रिलेशंस था, लाइक डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशंस, ये इंडिया हैंडल करता था बिकॉज द स्टेट बाय इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल. तो इट नीडेड अ लार्जर स्टेट टू टेक केयर ऑफ इट. तो इसके डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस जो थे वो इंडिया हैंडल करता था, और सिक्किम का जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर था वो सब मोनार्की जो रूल में था वो उसके कंट्रोल में था. सो the internal powers was with the monarch of Sikkim, who was Chogyal. He belonged to the Lepcha Bhutia community. सिक्किम में द लेप्चा भूटिया कम्युनिटी इज एक्चुअली अ माइनॉरिटी. ये कम्युनिटी बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है विच हैड अ रॉयल लाइनेज, रॉयल पोजीशन. तो इस कम्युनिटी का जो लीडर था चोग्याल, ही वॉज द मोनार्क, ही वॉज रूलिंग ओवर सिक्किम. बट सिक्किम में मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो था वो नेपालीज का था, राइट? सो द नेपालीज वो वाइड स्प्रेड इन सिक्किम. एंड व्हाट हैपेंड इज पीपल स्टार्टेड रिवोल्टिंग कि जब मेजॉरिटी पॉपुलेशन एक दूसरे कम्युनिटी से है तो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का लीडर कैसे उस पूरे स्टेट को रूल कर सकता है. दिस वाज द एजिटेशन दैट स्टार्टेड इन सिक्किम. मोरओवर people did not want monarchy. Since इंडिया खुद को एज अ डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइज कर चुकी थी, सारे स्टेट्स के बाउंड्रीज रीड्रॉ कर दिए गए थे और इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद एक डेमोक्रेसी खड़ी हुई थी, राइट? तो सिक्किम के लोग उस वक्त मोनार्की से चिढ़ चुके थे. वो कहते अगर इंडिया में डेमोक्रेसी है तो सिक्किम में भी डेमोक्रेसी होना चाहिए, सिंस सिक्किम इज बेसिकली मैनेज्ड बाय इंडिया. So what happened is people started revolting in this line. सिक्किम का जो पहला असेंबली इलेक्शन हुआ था विद इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, दैट हैपेंड इन 1974. इस इलेक्शन में द सिक्किम कांग्रेस केम टू पावर. देयर वाज अ कांग्रेस विद इन सिक्किम, द कांग्रेस फैक्शन ऑफ सिक्किम. दैट पार्टी enjoyed a lot of popularity within Sikkim. So this party came in power in the 1974 assembly elections, which was the first ever elections that happened in Sikkim. तो Sikkim Congress जो था, it was a part of Congress, right? So it will obviously have more inclination towards India. So the Sikkim Congress wanted more integration with India. Now after this party came to power, what happened is उन्होंने कहा हमें स्टेटस चाहिए एसोसिएट स्टेट का. लाइक up till this point Sikkim was a separate state on its own, but after the Sikkim Congress came to power, they said we want to be an associate state with India. We don't want to like fully integrate, we want to be a part of the Indian Union, right? After they declared that they want to be an associate state, there was a resolution in April 1975 जिसके तहत ये कहा गया था, कांग्रेस ने, सिक्किम कांग्रेस ने ये कहा था कि we want full integration with India. They were not just happy being an associate state. They said if we are a part of the Indian, why not be a complete absolute part? Why have any separatism? So they wanted to be a part of the Indian Union. The Congress passed a resolution in 1975, just a year after they came to power. इसके लोगों के व्यूज लिए गए. देयर वाज अ रेफरेंडम, राइट? सो देयर वाज
a referendum. अब referendum क्या होता है? This practice exists in democratic countries जहाँ पे लोगों को power दी जाती है. Referendum में when you have a choice like whether to be a part of the Indian Union or not to be a part of the Indian Union, इसमें लोगों के views लिए गए थे और उनसे मतलब पूछा गया था कि do you want to be a part of the Indian Union or don't you want to be a part of the Indian Union? And most people obviously agreed towards integration with India because they wanted democracy. वो नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई वो भी कोई minority community का monarch rule करते रहे. They did not want to be oppressed under the aristocracy. They wanted democracy. इसलिए all majority people said in the referendum that they want to integrate Sikkim with India. So after this referendum was passed, India considered Sikkim as its own state. Sikkim became the 22nd state of the Indian Union. There was this merger happened between Sikkim and India. But what happened is, obviously Chogyal, this man, did not like it. The supporters of Chogyal, जो monarchy के support में थे, जो people who were close to Chogyal, said that India ने they plotted against the monarchy. India had its own like reservations against the monarchy. So this was all India's evil plan to remove Chogyal from power. People of this community and people close to Chogyal also presented their own views, presented their own struggles for keeping this man in power. But Sikkim had been merged into India, और इसके बाद से the politics of Sikkim has not been any violent or there have been no protests. Majority people of Sikkim wanted to be a part of India, and that's why even though it was a separate state on its own, but because of the inclination of people towards democracy and towards the Indian Union, Sikkim had been merged into India.